अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ 9th फिजिक्स के गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तमाम पंजाब बोर्ड और आज़ाद कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो इस गेस्ट पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तमाम जो बुक्स हैं उनका गेस्ट पेपर जो है वीडियो जो है उनकी वो शेयर हो रही है। कुछ हो चुकी है, बाकी कुछ रहती है, वो भी जल्द आप लोग के साथ शेयर कर ली जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, डिफाइन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज विद एग्जांपल, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, डिफाइन जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। या फिर ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। Next, I define plasma and geophysics. What is meant by scientific figure? Write down rules to find the significant digits. यहाँ पर एक चीज़ और कि आप लोगों ने जो है फिज़िक्स की तारीफ, फिज़िक्स के डेली लाइफ में जो है इस्तेमालात और उसके अलावा फिज़िक्स की ब्रांचेस जो है वो आपने लाजमी याद करनी है। What role SI units have played in the development of science? What is vernier calipers? Write the least count of vernier calipers. How least count of vernier calipers can be calculated? Define prefixes. Express ये वैल्यू दी है इसको किलो में एंड मेगावाट में जो है वो करना है बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप लोगों ने कर लेना है। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसके बाद है ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स की बुक में, या फिर साइड से जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं या कोई इंफॉर्मेटिव बॉक्सेस दिए हुए हैं, उन बॉक्सेस को जो है आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। आपके अगर कंसेप्चुअल सवाल जो है वहाँ से कोई ना कोई पूछा जा सकता है। उसके बाद यूनिट नंबर 2, कैन अ बॉडी बी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैज एन एक्सेलरेशन, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एन एग्जांपल, डिफाइन रैंडम मोशन, गिव एग्जांपल, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, गिव एग्जांपल, हाउ कैन अ वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकली, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, राइट द यूज ऑफ लीडार गन, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन विद एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर एग्जांपल, difference between distance and displacement with example, difference between speed and velocity with formula and SI unit, convert 50 km per hour speed of a body into a meter per second, define uniform speed and uniform velocity, define acceleration, difference between positive acceleration and negative acceleration, write equation of a motion for uniform acceleration, define gravitational acceleration and write its value is SI unit, define graph, draw the कांस्टेंट स्पीड, व्हाट डज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड गिव। तो ये आप लोग का चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। वो करते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। तो सबसे पहले स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। यूनिट नंबर 3 में डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव इक्वेशन। State Newton third law of motion and write two example. Define force and its unit. Define force in term of momentum with formula and SI unit. Difference between mass of a body and weight of a body. Define inertia and law of inertia. Define momentum with formula and SI unit. Define force of limiting fraction and coefficient of fraction. Write its mathematical form. Define fraction and limiting fraction. What is meant by bar racking and scattering? What is meant by tension of string? Difference between centripetal and centrifugal force. Difference between sliding friction and rolling friction. When a gun is fired, it's required where rolling friction is less than sliding friction. Write down any two advantages and disadvantages of friction. Where does a passenger move outward when the bus takes a turn? उसके बाद यूनिट नंबर 4, डिफाइन पैरेलल फोर्सेस, आल्सो डिफाइन लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, डिफाइन रिजिड बॉडी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, हाउ कैन अ फोर्स कैन बी resolve into its rectangular components, define axis of rotation and resolution of force, what is head to tail rule of a vector addition with example, how does head to tail rule help to find the resultant of forces, define S condition as second condition of equilibrium with formula, what is rigid body and moment arm and axis of rotation, define torque with formula and SI unit and line of action for, define stable, unstable and neutral equilibrium with example, what is meant by principle of moments, define plumb line and center of gravity, define equilibrium with example. उसके बाद चैप्टर 5, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड जो कैपिटल जी, डिफाइन मास ऑफ अर्थ, हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड, why is law of gravitation important to us, what is meant by global positioning system,
On what factor orbital speed of a satellite depends? Define satellite and communication satellite and artificial satellite, right? Its uses define force of gravitation and give one example where communication satellites are stationed at a geostationary orbit. State the law of gravitation, right? Its formula. Define field force and natural satellite. उसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, define work and unit of work. What is SI unit? On which factor work depends? The kinetic energy of a body of mass 2 kg is 2.5 j. Then find speed. Define energy with example. Give two types of mechanical energy. Define kinetic energy with formula. Define light energy, nuclear energy, energy from the sun. Define potential energy, elastic potential energy. Define power with formula and SI unit. Difference between joule and watt. What is meant by an ideal system? Define efficiency of a system. How can you find the percentage efficiency of a system? Write a brief note on Einstein mass energy equation. Write two advantages and disadvantages of fossil fuel. Define solar energy. Also write its uses. Define electrical and sound energy. उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7. व्हाट इज barometer and Archimedes principle. Define feature of kinetic molecular model of matter. What is meant by elasticity? The mass of 200 centimeter cube of stone is 500 gram. Find its density. What is Hooke's law? What is meant by elastic limit? State Pascal law. Write two example of application of Pascal law. Difference between strain and tensile of strain. Stress भी आप कर सकते हैं. साथ can be use a hydrometer to measure the density of milk. ये milk है sorry. Where does atmospheric pressure vary with height? On what factor pressure of a liquid depends? What is meant by atmospheric pressure? Define deforming force and define pressure in liquid. Define the term pressure या stress. Give its SI unit. Define density and Young modulus with formula and SI unit. Next unit number 8. Define the term heat and temperature with SI unit. Define central heating system. Where does heat flow from hot body to cold body? Explain how cooling is produced by evaporation. How does heating affect the motion of molecules of a gas? Define specific heat and specific heat capacity with formula. Define internal energy and absolute zero. Define thermometer. Also write its characteristics. Define evaporation. Give two uses of cooling effect by evaporation. Does nature of a liquid affect evaporation? Give example. How evaporation differ from vaporization. Write any two uses of thermal expansion in our daily life. What is meant by metallic strip? Also write uses. What is thermal equilibrium? Define coefficient of volume thermal expansion and what is its SI unit. Define coefficient of linear thermal expansion and what its SI unit is. Define latent heat of fusion and latent heat of vaporization. उसके बाद चैप्टर नंबर 9. What is meant by transfer of heat? Right method of heat transfer. What are the metals good conductors of heat? Where conduction of heat does not take place in gases? What measures do you suggest to convert energy in houses? Define conduction and radiation. What is Leslie cube? Write the name of its surface. Write uses of conductor and non-conductor. Define convection and convection current with uses. Define thermal conductivity and rate of flow of heat and write both equations. Define land and sea breeze. Why does a cup of a hot tea become cold after some time? तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो 9th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का गेस्ट पेपर है. उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हो गया होगा. चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. गेस्ट पेपर और भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.